Very warm good morning to all of you dear students, and welcome to this first introductory class on world history. Thus far, in the course of last few days, you have attended sessions of different faculties who have, by now I'm sure, introduced the basic structure, nature, and process of the civil services examination. So in today's class, I will rather keep myself focused on the specific subject that I'm going to teach to you all over the course of next about 18 to 20 lectures, which is world history. Now, first and foremost, let me congratulate all of you for having thought of civil services as a career option for yourself. The next year and a half that we are going to spend in preparation for this exam is going to be a very, very important landmark in your life. The skills that you're going to develop, the knowledge that you're going to gain is going to transform you completely as an individual, as a person. Whatever the outcome of the exam at the end of it is a completely different matter altogether. But if you exert yourself honestly, then I can assure you that at the end of this process, when you're thoroughly prepared for the exam, for sure you will be an individual who is completely transformed. We hear a lot about personality development and these kind of things these days. Right? But what exactly is personality? Personality is sum total of certain traits or qualities that an individual has. And this cannot be artificially developed. Personality is developed when you expose yourself to challenges, when you acquire new knowledge, new skills. And this exam process actually does that for you. Okay? So when you crack the exam and get the service of your choice, that of course is our ultimate aim. But parallelly, you're also going to enrich yourself at an intellectual level, develop your personality like no other process can actually do for you. Having said that, let me summarize the essence of preparation for civil services exam. A year ago, when the results had come out for the previous attempt, Nitisha Jatta, a student of Unique, she cracked the exam in her very first attempt. Barely out of her college, she appeared for the exam and topped it, got Indian Police Service. And there was another candidate who also cracked this examination, but in his fourth attempt. And I know another candidate, personally I was mentoring him, he made it to the interview but could not make it, and that was his sixth and last attempt. So the question that comes to mind actually is, what is it that enables you to crack this exam, especially in your first or second attempt? How is it that some are able to do it so early at such a young age, whereas some take a lot more longer and some are not able to make it? What is the critical difference between these candidates? Now, logically, if you think is, the candidate who has worked hard for 4 years, 5 years, taking multiple attempts, naturally will have more knowledge than the first attempt candidate. Do you all agree with this? And yes, all of these are sincere candidates, not who took 4 attempts, 5 attempts. They've all put in a lot of effort. So one thing we can say for sure, that it is not about knowledge or information alone. Had it been so, then the senior candidates would have surely made it, and it would have been impossible for the first, second attempt candidate to crack it. But we see increasingly, first, second attempt candidates are not only clearing the exam, but they are also topping in this examination. So what is it that makes the difference? So to summarize all my experience of, first of all, appearing in these exams and then guiding students for the last several years, I'll summarize this into a simple formula. I want you to write it down. This will help you in the course of your preparation. So I'm making it mathematical so that you're able to relate with it more easily. Success in civil services exam is equal to success in civil services exam is equal to. Up is formula. Let us go back to our school times and remember how mathematical formulas were constructed. There will be one constant and 2 variables. One constant and 2 variables. अब क्या है constant देखिए इसमें. Success is equal to पहली चीज आएगी constant.
Coverage of syllabus. Coverage of syllabus. Bracket पे आप उसको लिख सकते हैं. This is the constant. Coverage of syllabus. Now, why do I call it as constant? Mathematics के terms में हम जानते हैं constant क्या होता है, which has a fixed value. But the syllabus is same for all the aspirants. It is not different for you and different for somebody else. It's the same. Okay, so that's why I call it constant. It is not going to change. Everybody has to prepare it. But having said this, let me tell you that a lot of students do not take the effort of covering the entire syllabus. They will go around doing a lot of stuff without first doing the basic. Okay? Until and unless you do the basic, there is no point in going and doing things which are more advanced. Do you all agree with this? Okay. So your first task or first target has to be that you thoroughly cover every single point given in the syllabus. A very exhaustive syllabus has been given by UPSC, and all the questions will be connected to the syllabus only. Unless we have content on every single point of the syllabus, there is no point in doing stuff which is extra, which is value addition oriented or some other stuff. First, focus on thoroughly covering every single point of the syllabus. In the class, we will extensively do this, but also you have to make it a point that you understand the syllabus carefully. Okay? Break it down into smaller points. See the previous year's questions linked to those points, and try to have at least 250 words ka content on every point given in this course. This has to be your base. Okay? Every single point, at least 250 words ka content हमारे पास में उस पर होना चाहिए. Okay? So this is the first part of our format. क्या लिखा हमने? Success is equal to coverage of syllabus. This is the constant. Now multiply that multiplication sign into a thinking mind. Thinking mind. And in the bracket, write down variable number 1. Okay, we're writing the formula for those who have joined us late. Success is equal to coverage of syllabus. This is the constant. Why constant? We have understood that. And then the sign of multiplication. Okay? And a thinking mind. Now, what do I mean by this? Is UPSC through this entire process wants to check what kind of a personality you have. Prelims, mains, interview, all of this is designed to uncover whether you have officer-like qualities or not. And very important aspect regarding this is your thought process. आप सोचते कैसा हो? This is very central to it. And a very big blunder that a lot of candidates make is they tend to replicate the rote learning from school, college that we have learned in this process. Okay. This is the biggest and first blunder that you can do in this exam. This exam is not about a rote learning. Okay. रट्टा जिसको हम कहते हैं ना, ये exam उसका नहीं है. Okay. You really need to apply your mind and thoroughly understand the concepts. Okay. So that's why I'm stressing on this, that you need to have a thinking mind. Every day you need to, before you go to bed, make it a practice. Last say 20 minutes of the day before you go to bed, sit in a quiet place and contemplate, manan karaycha, over what you have studied, what you have learned. Okay, try to question yourself, try to recollect what you have understood, try to apply that in your day-to-day life. Whatever you learned, whatever you have understood, that will develop your thinking mind, and this will immensely make your preparation easy, interesting, and also ensure your success. Second aspect, and I have consciously said multiplication, not addition. Okay. Multiplication is obviously going to increase the value of success much more. Okay. So this is the first variable. Next one is sharp or effective articulation. Multiplied by, write down the next aspect. Sharp or effective articulation.
So what do we mean by that? It means the nature of the exam is descriptive. Interview obviously is in oral form. You might be having a lot of good thoughts, ideas, content. But if you're not able to express them effectively on the paper, then all of that content is not really going to help you. You must have the skill of articulating your ideas in words on the paper. If you don't have that skill, then all the effort, pains that you have taken will go waste. You have a set timeline. 3 hours you have to solve 250 marks ka paper. One question in 7 minutes you have to complete. Okay, and that too you have to do it effectively, addressing the demand of the question, adding value to what you are writing, presenting it in a proper manner. All of these things have to be taken care of. This will not happen in the exam hall. For this, you have to take efforts right from the very initiation of the process. Okay, so that's why effective articulation is very, very crucial. When you have these 3 things, coverage of syllabus, then thought process, thinking mind, and lastly, effective articulation. When all of these 3 things combine, then that can lead to your final success of the exam. What happens with students is they compromise on some of the aspects of this formula. Either syllabus is not covered or syllabus है लेकिन writing की practice नहीं की है, articulation नहीं है, या thought process develop नहीं किया है. So all the effort that you take goes waste because of that. I'm sure you all want to crack in your very first attempt and get the service of your choice, be done with it, have that satisfaction that you were through with it in your very first attempt. For that, you must be able to see this larger picture. Balance your preparation on all of these 3 aspects. Okay, so this is a very basic and important input that I wanted to share before I start my discussion. Now let us start about the subject called as world history. In 2013, when UPSC changed the pattern of civil services examination, it introduced 4 papers of general studies instead of 2. Earlier there used to be 2 papers. And in GS paper 1, we have the subcomponent of history. And within history, additionally, UPSC now introduced world history also. And very rightly so. World history की understanding बहुत ही crucial है to have a firm foundation of understanding today's world. आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, the age that in which we live in, the basic values, ideas, institutions of today's world have been shaped by developments in world history. Take for example, we live in a nation state called as India. Apart from us, there are total 193 nation states who are part of the United Nations. Now, how did the world come to be organized into this structure called as nation states? ये कब हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? ये सारी development आपको world history में. There are some basic values which are believed in the world over. Values like liberty, equality, fraternity, nationalism, republic, democracy. What are all these? These are values and ideas which the whole world today believes in, aspires for. How and where have these values and ideas come from? Why are they considered as the best for mankind today? All of this has evolved through a historical process. क्या थी वो historical process? ये अगर हम नहीं समझेंगे तो इन values, ideas, institutions के importance को हम नहीं समझ सकते. ठीक है? We can't understand the foundation of today's world, and therefore it's very crucial that we study the history of the world. History of the world also helps us to build a base for modern India. Modern India is a very crucial component in our syllabus. Modern India समझने के लिए world history आपको बहुत help करता है. Study of modern India में we will study the struggle against British colonialism. But why did the British in the first place come to India?
Why are they going to all other parts of the world? Why are they conquering new territories? How the struggle is starting in different parts of the world? India की struggle उसमें कैसी similar है और कैसी different है? If we have to understand modern India, we have to understand history of the world first. It also helps us to understand international relations. IR is a significant component of our GS paper 2. I'll be teaching you IR also. आज के international relations समझने के लिए we have to understand the past first. For example, when we will study India's relations with China, we have to first understand how China became a communist country. What is their century of humiliation that Xi Jinping recently spoke about? Okay. How is it that China has been able to so rapidly advance and become a challenger to USA? आज का चाइना समझने के लिए आपको पास्ट का चाइना पता होना चाहिए. Okay, all of that understanding will come through world history. Okay, so understanding world history is going to help you on multiple counts. In general studies paper 1, broadly speaking, world history questions have been asked in the range of 1, 2, 3. Means every year 3, 2 or 1 as a number of questions हमको mains के अंदर देखते हैं. So relatively speaking, the number of questions are definitely less, but that in no way reduces the importance of world history. We should not just see it in terms of number of questions that are asked, but also see it in terms of the base building for other important components like modern India, international relations, essay, so on and so forth. Okay? Now, having said this, let me tell you some nuances regarding preparation of world history. जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो किन चीजों पर हमको ध्यान रखना चाहिए? First aspect of this. Now, when we say world history, the term by itself, gives an impression that we are going to study the end of the world, but that is not the case. हमको पूरी दुनिया के इतिहास को नहीं पढ़ना है. It's a misnomer in that sense, but ये नाम उचित नहीं. So क्या पढ़ना है फिर हम लोगों को? आप इसको लिख के रख सकते हैं. जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, we are studying only history of modern Europe. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? History of modern Europe and its interconnections with the rest of the world. History of modern Europe and its interconnections with the rest of the world. History of modern Europe and its interconnections with the rest of the world. Now you may wonder, why are we supposed to study the history of modern Europe? सर हम तो भारत की सिविल सेवा परीक्षा दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर हम यूरोप पर क्यों फोकस करें? ठीक है दोस्तों, इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इस चीज को आपको समझना है. Mankind, whatever it does, it is based on certain set of ideas. हम जो कुछ भी करते हैं उसके फाउंडेशन के अंदर में होता है कुछ विचार, कोई आइडियाज. Ideas shape our outward realities. अग्री करते हैं आप इस चीज को? मॉडर्न वर्ल्ड की जो आइडियाज हैं, those have emerged in Europe, and then the rest of the world has only emulated them. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडिया ऑफ लिबर्टी, एक मिसाल दे रहा हूं मैं. आप लोग जीन्स टी शर्ट्स पहने हुए हैं. This is the kind of clothing that we wear. If somebody comes and tells you that why are you wearing jeans and t-shirt, you should wear only traditional Indian dress. आप धोती कुर्ता ही पहने या आप कुर्ता पजामा ही पहने. What will be your retort? What will be your response to that person? You will say, you mind your own business. What I wear is my choice. मेरी मर्जी. कहेंगे कि नहीं आप कहेंगे? Right? This is basically the idea of liberty. Every individual has the right to live his life the way he wants to, as long as it does not affect others. मेरे जीन्स टी शर्ट पहनने से आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही, so I have the right to wear what I want to wear.
This is an ideal. ऐसा हमेशा नहीं था. Okay, we had social norms, structures, institutions which tried to enforce their ideas on all the people. ठीक है? यूरोप के अंदर में भी ये सेम सिस्टम थी. But when this idea of liberty comes about and it is accepted, then there is a change. Okay, people have the freedom to enjoy their rights the way they want to. ये liberty का concept है. कहाँ से आया है? It is coming from Europe. The rest of the world is emulating it. The idea like republic. Okay. What is meant by republic? गणतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? What is meant by republic? If I'm asking. Yes. Any clue? Yes, madam. Public के द्वारा चलाया जा रहा है. Okay. What else? Anybody else? Okay. देखिए civics जब आप पढ़ते थे स्कूल में उसमें आपको पढ़ाया जाता था रिपब्लिक का मतलब क्या है? Head of the state is elected, not hereditary. राजशाही में क्या होता है? मोनार्की में क्या होता है? Head of the state is hereditary. राजा का बेटा राजा बनेगा. ठीक है. रिपब्लिक में आपको जो पढ़ाया गया स्कूल के अंदर में head of the state is elected. At a deeper level, what does it mean? No state office will be hereditary. It will be open to all. Idea? Are we implementing that idea now? If the head of the state itself is any other post be hereditary? Obviously not. So we are setting that standard. कहाँ से आया idea? It has come from Europe. Okay. So many of these ideas that we consider so natural for us today have actually emerged in Europe in modern times. And therefore we have to study these ideas. Getting this point? Before modern times, Asia was more advanced than Europe. Europe was in dark ages. Okay? But some change, some transformation takes place in Europe. They develop newer ideas and advance over the rest of the world. That is why our focus is on modern Europe and how those ideas are going to go across to the world. ये बात समझ में आई आपकी? So when we study world history, what are we going to study? History of modern Europe and its interconnections with the rest of the world. This is the first nuance that I want you to remember. Second, when we study history, especially world history, you have to focus more on the flow of the history. Okay? The history that has been taught you in school and college was generally, chapter based, one topic. ठीक है? इस टॉपिक में क्या है बस उतना ही समझ लीजिए. अगला टॉपिक इंडिपेंडेंट कुछ और. लेकिन हिस्ट्री ऐसे नहीं चलती है. हिस्ट्री चलती है फ्लो में. आज जो चीज हो रही है that becomes the base for something that is going to happen tomorrow. That will be the base for something that happens day after tomorrow. So there is a constant flow that is going on in history. We have to understand or catch this flow of history. This is what is most important. Okay, so we have to understand ideas and we have to understand flow of history. These two nuances we will have to remember when we prepare history. So मेरी बात आप लोग की ठीक है? Now let me tell you what sources you will have to refer for preparing world history. Sources are very important. First source that you will have to refer to will be old NCERT of Arjun Dev. Story of Civilization is the title. Story of Civilization by Arjun Dev. And in this also, part 2 of this NCERT. Story of Civilization, part 2. Author is Arjun Dev. Okay. So right away, you can download the PDF. It's an old NCERT, so you will not generally find it in stationery stores. You have to download the PDF and take a print out of it. Or you can go to our Unique Academy store and get a Xerox copy also. Whichever way. So download that NCERT and start reading it right away. This will form the base of your world history preparation. Second source after this will be your class notes. Class notes will be provided to you in physical copy. And also,
They will be there on the portal of Unique Academy in soft copy form. So you can read it in soft copy also if you like. These will be the two most important sources for world history preparation. Third source, if you want to add one, is World History by Jain and Mathur. World History by Jain and Mathur. This is a standard reference book for preparing world history. But please remember that this textbook is bulkish. It is designed with history optional in the mind. Okay? Therefore, it has a lot of details. For general studies, we don't require the technical details. We only require basics. So if ever you start reading the book, don't get bogged down with the technical details. Just see the basic aspects. Okay? Now, do you need to compulsorily refer to this? No. My class notes will suffice for world history preparation. They are more than copious. Okay? But कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग की इच्छा होती है, कुछ और पढ़ने की इच्छा होती है, वैल्यू एडिशन की इच्छा होती है. So for them, this source will be a good general. So I told you about the source regarding preparation of world history. Now let me share my slideshow with all of you, and let us start our discussion on actual content of the syllabus. The first topic that we are going to study in case of world history is the Industrial Revolution. Industrial Revolution is going to be a very, very significant revolution or change that mankind will see first in the field of technology. We, since primordial times, we as in human beings have been producing goods for our needs. और ये goods वस्तु बनाने का हमारा एक बेसिक तरीका होता था, जहां पर में वर्कर्स अपने हाथ से चीजों को बनाते थे और फिर उसको यूज किया जाता था. जब हम मॉडर्न टाइम्स की तरफ आते हैं तो एक बड़ी लैंडमार्क चेंज या डेवलपमेंट होती है इन द टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. दैट बिग और मैसिव चेंज is known as Industrial Revolution. This change in the way we produce goods is going to have an impact not just on technology, not just on economy, but also on all aspects of human life. As we are talking about fourth Industrial Revolution. ये first की बात करेंगे हम, आज हम चौथे Industrial Revolution की फेज में. You have so many advanced technologies now. Sitting over here, I can control my car, which might be in some other continent. Okay. Not country, in some other continent. I can wear clothes which are adjusted to have a particular body temperature for myself. Where did all of these developments start? इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? It has started over here in this Industrial Revolution. So let us first understand what is the basic concept of Industrial Revolution first. In all the topics that I will teach you, my first slide will be about the basic concept. UPSC में दोस्तों there is a premium on conceptual clarity. यानी अगर आपकी basic concepts clear हैं, तो इस एग्जाम के अंदर में आपको डेफिनेटली बहुत एज मिलेगा. And if it is other way around, basic concepts अगर आपके क्लियर नहीं है, you can't even dream about cracking this exam. इसलिए मैं स्टूडेंट्स अक्सर कहता हूँ that you should maintain a separate notebook, एक अलग notebook आप रखें, in which you will mention all the new concepts, only concepts, no technicalities, no details, nothing, only 3 line, 4 line में concepts. List out all the concepts that you come across. So that is there as a ready reference for you to revise over and over. This book will be called as the concepts book. Okay, is practice problem. Let us see the first topic and again the core concept, that is Industrial Revolution. What is meant by Industrial Revolution? Industrial Revolution is a new
सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। पहली चीज आपको ये समझना क्या है, ये एक नई प्रणाली है गुड्स प्रोड्यूस करने की। इससे पहले यानी हजारों सालों तक बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट, विपरीत एक नई सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कौन सा है? न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सो वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यू इन दिस न्यू सिस्टम। काय नवीन है याच्या मध्ये? इन दिस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, इसको हिंदी मराठी में कहेंगे भांडवल, कैपिटल, मशीन टूल्स, ह्यूमन लेबर, रॉ मटेरियल। What is happening in this new system of production? Capital, machine tools, human labor, and raw material. 4 aspects. They are all brought together in a single place called as factory. क्या कहना है? Repeat after me. Capital, machine tools, human labor, and raw material. All of this is brought in one place for production called as factory. पहले कैसा होता था प्रोडक्शन? वर्कर हैड अ लूम इन हिज ओन होम, ठीक है, वो वहां पर में यान बनाता था, यान से कपड़ा बनाता था। कहां कर रहा है? अपने ही घर में कर रहा है, ठीक है। ही डज नॉट हैव टू गो टू द सिटी, वो गांव में बैठ करके भी कर सकता है। अब कैसे चेंज हो गया? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह पर मिलाए जा रहे हैं इन अ प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज फैक्ट्री, एंड दिस फैक्ट्री इज कनेक्टेड विद पावर, नॉट ह्यूमन पावर और एनिमल पावर। पहले जो प्रोडक्शन होता था वो ह्यूमन या एनिमल पावर से होता था, अब किससे हो रहा है? नाउ यू हैव मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। स्टीम का इस्तेमाल होगा, आगे चल करके इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा, राइट? So the form of power has also changed. Earlier it was human or animal power. Can you see the change? So we are having a new system of production in which, number 1, capital, machine tools, human labor, raw material are brought in one place called as factory, which runs on power. ठीक है। अब ये जो सिस्टम हमने बना ली, मैनकाइंड ने बना ली, बिकॉज ऑफ दैट इट वाज, जब एक टेलर अपने घर में शर्ट्स बना रहा है, दिन में से वो कितनी ही शर्ट्स बना रहे हैं? 2, 4, 5, 10, ठीक है। बट अ मशीन कैन वर्क 24/7. It can produce hundreds, maybe thousands of shirts in a day, which was not possible earlier in human-based systems. Now we have machine-based systems. So mass production is possible, and that too in very less time. Okay? Mass production in less time. Consequently, the cost of production will also come down. If you are alone going for a trip to say Goa, and you going with the entire class of 150 people, okay, will the cost of travel, accommodation, all of that come down when you all go together? This is called as economy of scale. So obviously उसकी cost क्या हो जाती है? Reduce हो जाती है. So mass production, less time and low cost. This is the idea of industrial revolution. Got this point? What is industrial revolution? A new system of production that involves capital. After that, next, human labor, raw material. All of this in one place called as factory, connected with power, leads to mass production, less time, and also less cost. This revolution starts first in England. The developments पहले England से start हुई, and then later it spreads to other parts of Europe, and then onwards to other countries, even to colonies. Okay? So ये जो spread है industrial revolution का,
ये दुनिया को मॉडर्नाइज करने के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे प्ले करता है, ठीक है। दिस विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. Those countries which will industrialize, they will have or they will see a massive demand for two things. इंडस्ट्री तो बना ली आपने, उसके बाद में दो चीजें आपको लगेगी. रॉ मटेरियल फर्स्ट. इफ ब्रिटेन, जहां पर ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है और स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ है, टेक्सटाइल नीडेड कॉटन. कैन कॉटन बी ग्रोन इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ यूरोप? No, you need tropical climates for cotton. So it will be dependent on raw material coming from foreign countries. And secondly, market. ठीक है, कपड़ा तो आपने बना लिया, but ब्रिटेन में पॉपुलेशन ही कितना है, ठीक है. If you see England proper, England की बात करें, England is roughly the size of our Haryana. It is that small. And you can imagine then in mid 18th century उसका population कितना कम रहा होगा. Okay, so अब जो goods produce हो रहे हैं इसको बेचना भी है ना, profit कमाना है उसमें से, और population इनके यहाँ कम है, so it has to be sold somewhere else. Demand for markets. So wherever industrial revolution comes about, it leads to demand for two things: raw material and markets. ठीक है. So these countries will go and try to secure sources of raw material and assured market. And because of this, they are going to go and wage wars with other countries to annex them, make them a part of their colonial empire, so that that raw material and market can be secured. Okay? Shashwata. They want security of raw material and market, and that is why this will lead to imperialism by European countries. Did you get the idea? No? कैसे यूरोप ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वो यूरोप जो पिछड़ा था, बैकवर्ड था, डार्क एजेस में था, एशिया वाज मोर एडवांस्ड. Okay, you know, just to give you perspective, 1707, 1707 जो साल है, is a landmark year in India because Aurangzeb dies in that year. It's an important year. In 1707, India's share in world trade was 24%. कितना? 24% of world trade was India's share. China's share was 10%. 1707 की बात करें. और वहां से लेकर के आगे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा ब्रिटेन में, यूरोप में, you will see this drastic transformation. Currently, the trade policy of India has the goal. क्या है goal है? मतलब मैं अचीव नहीं किया है, वहां जाना है. Goal क्या है हमारा? Share in world trade should be some 2.5%. कितना? 2. मतलब 1/10 आप इमेजिन कीजिए, जितना हमारा था 70% उसका 1/10 हमारा आज गोल है. ठीक है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेयर वी वर टू वेयर वी आर, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इस क्रांति का इंडस्ट्री. गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है. दिस इज गोइंग टू अनलीश a lot of forces which will transform the world very rapidly. बहुत जल्द. ठीक है. अब ये सारी चीजें हम देखेंगे. कैसे करना है, क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? Now, understand present, we have to understand the past. To understand industrial Europe, we have to understand Europe in earlier ages. Isliye, very briefly, I am going to give you an overview regarding Europe in ancient and medieval times. Okay, this is not part of your syllabus. But to understand what is there in syllabus, you need to know a little bit of the background. Okay. Now, this map that you see guys on the screen is the map of the massive Roman Empire. Okay. This is a map around 280 के आसपास, 170 के आसपास. You can see the Europe, most part of Europe is covered by Roman Empire. One northwest में Britannia,
is covered. All of West Europe almost. Italy to Gardini and Roman Empire. Then East Europe, the Balkan territories, Asia Minor, Levant wala area, Syria, Israel, Palestine wala area. Then Egypt का northern part जो fertile वाला part है, and across right up to northwestern part of Africa, coastal areas. Such a massive territory spanning 3 continents is covered by one empire. Very advanced stage of civilization for Europeans. Okay. They have the resources of 3 continents at their disposal. Okay. They mark many achievements in different fields. Architecture अगर आप देखेंगे, वास्तुकला जिसको हम कहते हैं, आर्किटेक्चर में रोमन्स डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ आर्च. मराठी में कहते हैं कमान, हिंदी मराठी में कमान कहते हैं. कमान बनाना ये इंजीनियरिंग टेक्निक है, ये रोमन्स ने डेवलप. अगर आप गोल गुंबद जाते हैं बीजापुर में या ताजमहल या और ऐसी बिल्डिंग्स में, यू विल सी गुंबद के नीचे एक बड़ा हॉल बन सकता है. ठीक है, such massive buildings were built. You know, they had stadiums called as colosseums. क्या होता है? कहीं भी बैठो अरीना में, स्टेडियम में कहीं भी बैठो, आपको नीचे का ग्राउंड जो है उसका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा. So ऐसा स्टेडियम बनाने के लिए, you know, you have to understand mathematics, trigonometry, angles. ठीक है, so वो level of knowledge attainment बन चुका था कि 50,000 लोग बैठे हैं और किसी एक का भी विजन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है. They had developments in the field of infrastructure, roads. यहाँ से इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक roads connectivity. आज भी even today some of these roads are used in Europe, Roman roads. We're talking about, you know, Christ times. उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. मेरे घर के सामने का रोड 4 साल पहले बना था, आज उसकी हालत बहुत खराब है. और यहाँ पर thousands of years पहले वाले रोड्स जो हैं वो यूज किए जाने की स्टेट में अभी भी इटली के अंदर में आपको दिखते हैं. ठीक है, दिस वाज द ग्रेटनेस ऑफ एंशिएंट यूरोप अंडर द रोमन एम्पायर. You know, they used to trade with India at that time. केरला में there is a place called as Muziris. क्या नाम है? Muziris. वहां पर हमको अवशेष मिले हैं ऑफ रोमन कॉलोनी. वहां से आकर के कहां भारत और कहां केरला के अंदर में आकर के वो लोग रह रहे हैं. And they are trading with India. Indian goods, especially spices, were in huge demand in this great Roman Empire. आई बात सर? मैं क्लास में अक्सर सवाल पूछता हूँ. शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था. Everybody knows this fact. शाहजहां ने ही क्यों बनवाया? My question to you is, why did Shahjahan only build the Taj Mahal? Why not somebody else? Why not some other monarch, some other king? Taj Mahal is a masterpiece. ये शाहजहां ने क्यों बनवाया? Any thought on this? Because he brought that technology from Middle East. Okay, he had technology, fine. What else? Any other one? Yes. He had the concept of designs and art. Okay, he had the concept of designs, architecture. True, not wrong. He had interest. Yes, he loved architecture, building, and all of that. Yes. Because he wanted to keep his art. Right. So he wanted to, leave an imprint on history that I have to build something of that sort. Now, everything that you are saying is correct. It's not wrong person. But the most important reason why only Shahjahan could build the Taj Mahal is that Shahjahan is the high noon of Mughal Empire. When the resources of a massive subcontinent are at his disposal, he can use those resources to build that kind of a masterpiece.
Yes, technology is important, that interest is important. All of the things that you're saying are important. लेकिन ये सब है, resource नहीं है तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है? Shahjahan is at that point. Similarly here, the Roman Empire had the resources of 3 continents at their disposal, and we see that in their achievements in different fields. एक बार मैंने क्लास में यही सवाल पूछा कि शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया? So एक स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया, सर, because he loved his wife. Yes, he dedicated it to his wife first. But most husbands love their wife, but can every husband build a Taj Mahal? No, you can't. You need resources for that. You have to be a prince for that. Okay? So this is the picture of Europe that we see. Advanced उस time के sense में, okay? In ancient time. But this picture of Europe will start to change. कैसे बदलेगा? अब हम उसको देखते हैं. ये जो massive Roman Empire है, that got split into 2. Okay. This region is called as the Western Roman Empire, and this part is called as the Eastern Roman Empire. कब हो रहा है? This is around 4th century. 4th century से divided. तो पहले जो सारा बड़ा empire था, all the resources at disposal, अब वो खत्म हो गया. It has got divided into 2 parts. क्यों हुआ ऐसा? Because here in northern areas, there were a lot of ferocious tribes, particularly Germany. Okay, Germania, it was called then. And these tribes and Romans were always fighting. These wars were economically very burdensome for the Roman Empire, ultimately leading to its breakdown into 2. Western Roman Empire and Eastern Roman Empire. You got the point here? Eastern Roman Empire, the capital is here. Constantinople, the city. Today it is called as Istanbul. Okay, very good. Okay, Turkey and the Mediterranean. Istanbul, that was the capital of Eastern Roman Empire. Over the next few centuries, this Western Roman Empire is going to get fractured into smaller kingdoms. Whereas Eastern Roman Empire will continue for some time. Okay. Next 1000 years to be, Eastern Roman Empire is going to continue, but its area will shrink a bit. Okay. It will not be that massive, but at least it continues. Western Roman Empire में क्या होगा? Splitting into smaller kingdoms. Let me quickly repeat. हम क्या देख रहे हैं? Ancient Europe, its greatness under Roman Empire and Rome. Then we come towards medieval times where Roman Empire is divided into 2, Western and Eastern. Western Roman Empire will get fractured into smaller kingdoms, and Eastern Roman Empire will continue for some more time. Now this period from 4th century onwards is called as the medieval age of Europe. Okay, this medieval age of Europe is going to be a period of darkness. अंधकारचा युग म्हणतात. Okay, Europe side. Why is it called as dark age of Europe? Roman times, they are advanced technology, new developments, massive area, resources. वो सब चेंज हो जाता है medieval age में. और medieval age में हमको कैसा यूरोप दिखता है? We see a Europe which is having a church-centric life. Now, there's a key point over here that I want you to remember. ये आगे भी आपको reference काम आएगा. Christianity, show you the map. This is Jerusalem. Okay. Today is Israel, Palestine. Here, basically, Jesus Christ was born. Okay. He preached over here. He was crucified because of the Jews by the Romans. Jerusalem is part of the Roman Empire. Okay. So the rulers are who? Romans. The people living over here are Jews. Jesus is from within the Jews. He comes about, claims to be a prophet, and tries to preach his ideas. The Jews don't like his ideas, so what do? They complain to the rulers. Who are the rulers? The Romans.
Okay, so the Romans have been crucified, but at the behest of the Jews themselves. So now the religion that Jesus taught was followed by a very few handful number of people, but they were very, very sincere in their practice. श्रद्धालु हैं, थोड़े हैं, लेकिन बहुत committed. These people continue the practice of Jesus's ideas for next few centuries. Around the 3rd century, Roman Emperor Constantine, Constantine, he comes to know about this religion. He likes the concept and ideas given by Christianity, and he accepts that religion. Got this point? कब हो रहा है ये? 3rd century, Constantine becomes Christian, the Roman Emperor Constantine. Now, when Constantine becomes Christian, automatically Christianity now gets state support. Okay, and therefore, all of Roman Empire is slowly going to turn towards Christianity, and over the period, become Christian. जैसे भारत में हुआ था दोस्तों, अशोक मौर्य आफ्टर द कलिंगा वॉर, he accepted Buddhism. And a great ruler like Ashok, when he accepts a religion, he puts his back into spread of Buddhism. Naturally, Buddhism का rise होगा भारत के अंदर. The idea was there, but the massive spread वो तो होगा, ठीक है? So similarly, Europe में Christianity का spread होता है. Do you understand this point? You might have wondered ना sometimes कि Christianity वहाँ कैसे पहुँची? Why is all of Europe, why is all the Anglo-Saxon white world Christian? The reason is this: Constantine का acceptance of Christianity. समझ में आता है? ठीक है. Now, because it becomes Christian, Europe में medieval ages में the life is completely dominated by church. The church is the central institution of Christianity. People are believing Christians, and therefore the social, economic, political, all forms of human life are dominated by whom? They are dominated by the church. Okay? And the church is headed by the Pope. So remember, the highest Dharma Guru of the Christian world is called as Pope, and church-centric life हमको medieval part में आपको दिखती है. So what is the problem with this? The problem here is, before Europe became Christian, it was advanced. The reason being that there was no institution or no dharma satta which was controlling the thought process of people. Dharma satta, power of religion, okay, that is a very, very strong and potent power because it controls your thought process. अगर किसी भी समाज को प्रगति करनी, if you want to develop, then you have to have critical thinking. तुम्हारा प्रश्न विचारने लगता है. You have to ask questions. Why so? असं काम. Okay. And when you ask these questions of why, it breaks new horizons, new developments start because of these questions. But religion says you're not supposed to ask questions. Okay. If Bible says so, then that's the end of the matter. This, for example, Bible ने कहा the world is flat. ठीक है, एक प्लेट की तरह. फ्लैट है मतलब आप अगर उस पर चलते जाओगे, एज पे पहुंचोगे तो बाहर गिर जाओगे. ठीक है, वर्ल्ड इज फ्लैट की संकल्पना थी. गेटिंग, आज हमको हंसी आई इस चीज के ऊपर में, लेकिन उस जमाने में दिस वाज अ पावरफुल थॉट. यू कुड नॉट चैलेंज इट. सो जब धर्म सत्ता पावरफुल बन जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्टॉप होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू डेवलपमेंट्स डू नॉट टेक प्लेस. गॉट द आइडिया? सो वो जो सारी रोमन एडवांसमेंट्स थी वो अब बैकवर्ड्स चली. No new developments. Got the point? One. Second, we see that Europe is ruled by, earlier you had one strong emperor, Constantine, Julius Caesar, Augustus. ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सम्राटों के नाम हम सुनते हैं. But after we enter medieval age, Europe is fracturing
into small kingdoms and weak kings. Shah Jahan could build a Taj Mahal. We know that because of the resources at his disposal. Can the weak kings do anything great? No, they can't. Furthermore, these weak kings are dependent on their feudal lords. This is an important concept, please. Feudal lords or feudalism. Let's see what it means. मराठी में, हिंदी में हम उसको कहते हैं सामंतशाही. क्या होता था ये सामंतशाही? The king used to appoint some people as his representative for collecting tax from the citizens. कैसे आ रही है समझ? Is it very cold? Do we need to reduce the temperature? Increase the temperature. So we are seeing concept of feudal lord. What is the king doing? The king first appoints somebody as an officer to collect revenue from the masses. समझ गया था? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ so that you know you are able to relate. तो इमेजिन कीजिए पुणे डिस्ट्रिक्ट का एक किंग है. ठीक है? पुणे में 14-15 तालुका है. अब ये राजा कहता है कि फलाना हवेली तालुका है. हवेली तालुका के ऊपर में ये पर्सन को मैंने अपॉइंट किया है एज फ्यूडल लॉर्ड. ये क्या करेगा मतलब? ये वहां के जो लोग हैं उनके पास से स्टेट के लिए टैक्स कलेक्ट करेगा. ओके, टैक्स कलेक्ट करने के बाद में he will retain some money for himself and give the rest to the king. Now why does he have to retain money for himself? He has to retain money for himself because tax collect karna is not an easy job. You need manpower, especially you need muscle power for that. People will not easily give money out of their pocket. Nobody wants to give money. Okay? If you have to mobilize money, then you have to have strength. So for that, he needs some soldiers. So he keeps the money with him so that he can maintain an army with him. So king is appointing an intermediary for tax collection purpose. Okay? Tax collection के लिए उसको चाहिए muscle power और उसके लिए लगता है पैसा. So tax collect करके some amount he will retain and the remaining he will give to the state. समझ में आता है? अब क्या हो गया? Intermediary बन गया between the state and the citizen, the feudal lord. Over the period of time, this institution of feudal lords became hereditary. ये हवेली वाला जो हमारा लॉर्ड था, जब ये बूढ़ा हो जाता है तो राजा के पास में आके कहता है कि सर, I have served you very honestly for last several decades. Now I have become old. Allow my son to continue this same office. So initially the king allows him. Okay, ठीक है. Because you have done well, I allow your son to continue. After a few generations, this becomes more of a right rather than a discretion of the king. राजा की इच्छा पर नहीं, बल्कि अधिकार के तौर पे feudal lords hereditary बन जाते हैं. ठीक है? Slowly they become very strong in their areas. Local roots develop होते हैं, local connections develop होते हैं, and they start to now challenge the king himself. What is point? Yes, no concept? Okay. Now, where will these feudal lords live? Will they live in cities or will they live in areas where they are supposed to collect the revenue? Naturally, they will live in areas from where they are going to collect revenue for the state. गांव के अंदर. जैसे अगर आप पुरानी हिंदी फिल्में देखते हैं, तो you will come across a character called as ठाकुर साहब. ठाकुर साहब कहाँ रहते हैं? एक बड़ी सी हवेली में गांव है. ठीक है? घोड़े पर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, हरिया को चाबुक से मारते हैं, आओ हवेली पर, ऐसे टाइप ऑफ बोलते हैं. So these are the feudal elements. Where do these feudal lords live? In rural areas. Why? क्योंकि जमीन वहां पर है, टैक्स वहां से आने वाला है. ठीक है? Getting this point? Now, since the ruling elites go away from city into rural areas, the cities start to decay. ठीक है? सिटी में कब लोग रहेंगे? जब उद्योग धंधा होगा, कुछ वहां पर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी. लेकिन अगर एलिट्स ही सिटी छोड़ देते हैं,
तो फिर नेचुरली वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। जब एलिट सिटी में रहते हैं तो वो लोगों को काम पे रखेंगे ना, they will buy goods from them, buy services from them, but when the elites are living in rural areas, automatically city में opportunity नहीं रहेगी and cities will start to decay. What is happening? Romans के टाइम में we are seeing a massive urban kind of an empire. Cities हैं, रास्ते हैं, trade and commerce है। Medieval times में जब हम आते हैं, feudal system में जब हम आते हैं, so cities जो है वो decay होने लगती है। इसकी जगह पर मैं क्या लिखता है तो ग्रामीणीकरण होता हुआ, रूरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। महाराष्ट्र में आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ बलूते दरी। सुना है आपने 12 बलूतास? ठीक है, क्या होता था इस 12 बलूतास में? देयर वर 12 castes, okay, which used to do their traditional vocation, and in return they got share in agriculture produce and services of other castes. ठीक है, सो इस सिस्टम में कोई पैसे की जरूरत नहीं थी, मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं थी। जो नाई है वो फ्री में नाई का काम करेगा, लेकिन इन रिटर्न क्या मिलेगा उसको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेगा और दूसरे कास्ट की सर्विसेज एंड गुड्स मिलेगी। जैसे कुंभार उसको मटका देगा और नाई उसके बाल काटेगा, पैसे की जरूरत नहीं थी, नहीं। सो दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम, लैक ऑफ मोनेटाइजेशन वाला सिस्टम, ये आपको मिडिवल टाइम्स में यूरोप के अंदर भी दिखेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर आल्सो स्लोली स्टार्ट्स टू बिकम बैकवर्ड। नो न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, क्योंकि सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, no new developments taking place, so slowly steadily agriculture also becomes backward, and one practice of this backward agriculture was serfdom. Okay, what is this practice? Serfdom. अब इस concept को हमको समझना है, what is meant by serfdom. Serfdom समझने से पहले मैं आपको slavery बताता हूँ, because you know slavery, उससे आप easily relate। slavery यानी गुलामगिरी में क्या होता है? जो स्लेव है, गुलाम जो है, वो अपने मालिक को अकाउंटेबल होता है। जो मालिक उससे काम करवाएगा उसको वो करना है। इन रिटर्न ही इज फेड ट्वाइस और थ्राइस अ डे एंड गिवन क्लोथ्स टू वेयर। यही दो रिस्पांसिबिलिटी होती है मालिक की बेसिकली। जहां भी मालिक जाएगा वहां पर भी स्लेव उसके साथ में जा सकता है। मालिक चाहे तो स्लेव को, गुलाम को बेच नहीं सकता है। दिस इज द सिस्टम ऑफ स्लेवरी, ये आपको पता है। सर्वडम इससे थोड़ी डिफरेंट सिस्टम। सर्वडम में वो जो व्यक्ति है जिसको हम सर्फ कहते हैं, वो जमीन से बंधा हुआ होता है। जमीन से बंधा हुआ मतलब क्या? कि वो एक पर्टिकुलर जमीन के ऊपर ही काम करेगा। वो जमीन जिसकी भी ओनरशिप में होगी उसके लिए उस जमीन पर वो काम करेगा। ओनर चेंज हो जाता है, मतलब एक्स ने जमीन वाई को बेच दी फॉर एग्जाम्पल, still that serf will continue to serve on that same land. Now obviously for Y ownership has changed, but he will serve only on that land. ठीक है। Slavery में slave can be sold by the owner. यहाँ पर he cannot be sold. Why? Because he is tied to the land. The land can be sold, okay, and with the land the serf will also go to the new person, but he will be fixed over there. Slavery में the slave can go with the owner to some other place. Here he cannot go anywhere. He has to be there on that land. This is the idea of practice of serfdom. That is fine. इसको मराठी में एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, हिंदी में उसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, this tied to the land, बंधुआ, बांधा हुआ, बंधुआ मजदूर। नहीं, कुड़ एक अलग कंसेप्ट है। कुड़ क्या होता है? कुड़ जो है वो खेती करता है, किसानी करता है। ओके, वो जमीन का ओनर नहीं है, वो किसान है और किसानी करने के बदले में उसको शेयर मिलता है, तो वो कुड़ है। कुड़ एक अलग कंसेप्ट है। कुड़ को बहुत सारे राइट्स, फ्रीडम्स हैं। कुड़ चाहे तो वो छोड़ सकता है वो खेती करना। हमारा जो सर्फ है वो छोड़ नहीं सकता, उसको वो चीज करके ही रहना। समझ डिफरेंस? ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। You know, India saw a lot of invasions coming from northwest part of India. देखा नहीं? बहुत सारे लोग आए, शक आए, कुशान आए, हुन आए, मुगल आए, पठान आए, बहुत सारे लोग आए। And every time we see that the local rulers were
mostly defeated. Why does it so happen? One major reason behind that was our caste system. Our caste system made swordsmanship a privilege of certain castes only. यानी कुछ लोग ही जो है वो सोल्जर्स बन सकते हैं. प्रपोर्शन कितना होगा उनका समाज के अंदर में? 7 to 8%, 10%. 90% of the people were not allowed to take up arms. So उन 90% में कितने सारे talented लोग रहे होंगे ना, अगर उनको मौका मिलता डिफेंस के लिए, we would have had numbers and also the talent. So human resource waste हो गया इस process में. Getting this? Same thing is going to happen in Europe because of serfdom. A big population, chunk of population of Europe was involved in serfdom, and therefore all their talents will be wasted क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते. सुबह से शाम तक बस उस जमीन के ऊपर उनको काम करना है. That's all. This is the kind of society that we see in Europe in medieval ages. एक बार characteristics आप मेरे साथ में पढ़िए. Church-centric life of Europe, ruled by weak kings, feudal lords below the kings, decay of cities, ruralization of economy, backward agriculture, with serfdom as a practice. Yes. In my class, on some key points, I insist that you speak them out. Okay? It's foolish, I know, but when you say it aloud, no, it registers in your subconscious mind. Okay? आप जब बाद में इसको पढ़ेंगे और आपने क्लास में इसको पार्टिसिपेट किया होगा, you will be able to relate with it much better. Okay? So this is something that I often do on important points in the class. Okay? So we saw ancient Europe under the Romans, then we saw the dark ages of medieval Europe. Now we are going towards the modern Europe. And a major, massive development which will take place in this period will be the fall of the city of Constantinople. Constantinople, या शहराचा पडाव. ठीक है. What exactly happened? We see this now. I had told you Roman Empire was divided into two parts, Western and Eastern. Eastern Roman Empire का capital क्या था? Constantinople, city of Istanbul. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा zoom in किया हुआ मैप है. This is the city of Istanbul. टर्की में है. You know ये जो Istanbul है दोस्तों, this is very strategically located. इसके पास में दो स्ट्रेट्स. स्ट्रेट आप समझते हैं? Water body connecting two massive, bigger water bodies. Okay, दोनों साइड पे जमीन है, बीच में एक वाटर का स्ट्रेट. So यहाँ पर है बॉस्फोरस और डार्डनल्स. ये दो स्ट्रेट्स हैं जो कि ये ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं सी ऑफ मरमारा से. सी ऑफ मरमारा को एजियन सीज है और यहाँ से आगे फिर आता है मेडिटेरेनियन सी. So these are like the doors. Okay, जिसके पास में ये स्ट्रेट्स का कंट्रोल है, it's like that person is holding these doors. Okay? और इसीलिए Constantinople was founded, वहां पर बनाया शहर ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके. ठीक है. Around 14th century, in this part of Asia Minor, okay, Asia Minor, यहाँ पर में एक नई सल्तनत बनी जिसका नाम है ऑटोमन सल्तनत. ठीक है. ये मुस्लिम टर्किश स्लेव लोगों की सल्तनत थी, ऑटोमन सल्तनत. धीरे धीरे दिस सल्तनत goes on expanding in this direction and it comes into conflict with the Eastern Roman Empire. In 1453, the Sultan of this Sultanate, Sultan Mehmed the Conqueror, he attacked the city of Constantinople. Constantinople was a very well-built city. उसके आस-पास में 3 concentric दीवारें थी. सर्कल में 3 दीवारें. क्यों बनाई हैं? To defend against any attack. 20 armies, 20 सेनाएं, 20 armies had attacked this particular city of Constantinople, but nobody had succeeded. But this young Sultan Mehmed was made of very different stuff. Barely in his early 20s,
he had a steely resolve to breach the walls of the city and conquer it. 73 तोपें लेकर के वो गया to fight the city, और 4 महीनों तक continuously he was bombarding the city for 4 months. उसमें एक तोप ऐसी थी दोस्तों जिसका जो गोला होता है, आप समझते हैं, कैनन बॉल, that used to weigh 500 kgs, 500 किलो का गोला. You can imagine 500 किलो का गोला जो है वो फायर हो रहा है from about 2 kilometers, और वो उस पैराबोला की ट्रेजेक्टरी में आ रहा है 500 kgs. That distance, मोमेंटम की कंसेप्ट आपने पढ़ी है, मास इनटू वेलोसिटी. अब जब वो पैराबोला के डिसेंट में आकर के उस दीवार पर टकराएगा जहां तो आने, what kind of an impact that can create. But still he had to bombard the city for 4 months, and finally he was able to win this city. This will be a very landmark event in world history, which will unleash new forces that will take world towards modernity. एक historian ने 100 most important events की list की world history, 100 events, and he has graded first most important, second, third, so on. He ranks this event as the 7th most important event in the history of the world. सातवां डेवलपमेंट. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, अब हम आगे आपको बताएं. ठीक है, कि डेवलपमेंट तो समझ नहीं आप लोगों को, what is actually happening for the Constantinople. But let's see what will happen because of this. First, now that Constantinople has been won and Eastern Roman Empire has ended, therefore the overland trade route between Europe and Asia will become unsafe for Europeans. Europeans were trading with China and with India since ancient times, I've told you that. And the route that was used by them was the overland route, mostly. Silk route आपने नाम सुना होगा, ठीक है, the famous Silk route. इसके ऊपर में ट्रेडिंग कारवां चलते थे. अब ये सारे कारवां पास यहीं से होते थे. ये एरिया ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ गया. So this trade became difficult and expensive. It's risky. समझ में आता है? पहला पॉइंट, इसनो कैसे एक बार फिर से मैं बताता हूँ. देखिए, ये जो यहाँ से जो है वो ट्रेड जो गुजरता था, ये आगे चाइना में कनेक्टेड है, नीचे भारत में कनेक्टेड, ठीक है, और यहाँ से होकर के फिर यूरोप में चीजें जाती. Now that the Western Roman Empire has fallen, Constantinople is gone. Therefore, all of this area will come under the control of the Turks, and therefore Europe will find it very difficult to trade through this land route. अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, okay. Consequently, Europeans, especially Portuguese and the Spanish, they will try to find alternate safe sea route to India. क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? Alternate safe sea route to India. खुशकी का मामला, जमीन का जो रास्ता है, that is difficult, expensive, risky. तो क्या कर सकते हैं हम लोग? Let us find some safe sea route to India. Parallelly, यूरोप में scientific developments advance हो गए. गैलीलियो, कोपरनिकस, ये जो साइंटिस्ट हैं, ये लोगों ने कंसेप्ट्स बता दी थी that the world is not flat like Bible says, it is a elliptical ball. ठीक है? And if it is an elliptical ball, then if we circumnavigate around the world, घूम कर अगर हम आते हैं, किसी न किसी पॉइंट पे भारत तक पहुंचेंगे. ठीक है, ये लॉजिक था. They did not know कि बीच में अटलांटिक के उस पार you have two massive continents, North America and South America. वो पता ही नहीं, उनको लग रहा है समुद्र नहीं है, सो घूम कर जाएंगे तो कभी न कभी तो भारत पहुंचेंगे. ठीक है, with this idea, Europeans, especially Portuguese and Spanish, they started to launch, massive exploration projects. Aim क्या है? To find a alternate safe sea route to India in particular and Asia in general. का भारताची एवढं महत्व काय? Why is India so important?
many Indian products were in massive demand in Europe, especially India's spices. Europe के cold climate में meat consumption was very important because you need, energy, you need calories, you need muscles to survive there. और meat का problem क्या है? वो ठंडी में जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है? उसको preserve करने के लिए आपको चाहिए काली मिर्च, ठीक है? जो केरला में मिलती है. So for their survival, they require Indian products. Indigo, नील का नाम सुना? Natural dye. यूरोप में dyes नहीं थी, natural dyes नहीं cultivate हो सकती थी. Those were required to color the clothes. यूरोप में अगर किसी ने colored कपड़े पहने होते थे, he was considered as a rich man because उसको color करने के लिए dye भारत से मंगाई जाती थी. So clothes became expensive if they were colored clothes. That is how important India was. अब इसलिए ये लोग बाहर निकल पड़े. चल रही बात आपके यहाँ? Okay, आगे. Now when these people, you can see all of these arrows that are marked over here are basically explorations that are being done by Europeans. When these people set out sail, they accidentally make new geographical discoveries. Columbus, Amerigo Vespucci, John Cabot, Jacques Cartier, these are the initial explorers who thought it was far Atlantic in Asia, okay? But accidentally they discovered these new lands. And when these new lands were discovered, they felt that okay, this is also a great opportunity. But initially to unko laga कि we have reached Asia, but slowly they realized that this is not Asia; these are new continents. But yes, we can make most of this opportunity by building colonies over here. Now here comes a term, colony. What is meant by colony? Colony क्या होती है? जब मदर कंट्री से, यानी जिसने एक्सप्लोरेशन किया है, उसको कंट्री कहलाती है मदर कंट्री. या टेक्निकली उसको बोलते हैं मेट्रोपोल. जब मेट्रोपोल से या मदर कंट्री से लोगों को ला करके इन नए एरियाज में बसाया जाता है, then we call it as a colony. ये वर्ड कॉलोनी भी आपने सुना है ना, बेसिकली जहाँ लोग रहते हैं. तो इस केस में कौन से लोग जो मेट्रोपोल से लाए गए हैं टू सेटल देम ओवर हियर. क्यों लाना है लोगों को? People are needed to exploit the resources over there. You have massive resources in North America and South America. Fertile lands हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, लकड़ी है, हर चीज अवेलेबल है. लेकिन क्या नहीं है? पॉपुलेशन. ठीक है, इट्स वेरी वेरी स्पार्स. थोड़े से ट्राइब्स हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलता. वी नीड आवर ओन वाइट पीपल. अच्छा, कंट्रीज में एक रूल था दोस्तों, जिसने जहां एक्सप्लोरेशन किया, दैट कंट्री विल क्लेम दैट एरिया. ओके, सो वेयर ब्रिटिश एक्सप्लोरर वेंट, जॉन कैबॉट, ब्रिटिश कॉलोनी वाज एस्टैब्लिश्ड. वेयर स्पेनिश एक्सप्लोरर्स में, स्पेनिश कॉलोनी वाज एस्टैब्लिश्ड. So in these colonies, people from the mother country were brought and settled there. Now, when people are settled, consequently, exploitation of resources of that area starts, and this leads to long distance trade with Europe. Long distance trade is across Atlantic. Europe से चीजें लाई जा रही हैं to sell it to these people here, और इनकी चीजें ले जाकर के यूरोप में बेची जा रही हैं. This is called as long distance trade. Now let me at this point just recap what we have seen so that वो flow आपके ज़हन में अच्छे से रहे. ठीक है. 1453 पहले ancient Europe, Roman Empire, medieval times gets divided into two, Western and Eastern. Medieval Europe की characteristics change हो जाती हैं. Church-centric life, weak king, feudal law, ruralization of economy, agriculture is backward, serfdom. These are only medieval characteristics. Okay. Next, what do we see? Fall of city of Constantinople to the Turks. Fall of Constantinople, long distance trade becomes difficult. So Europeans want to find what? Alternate safe sea route to India in general, India in particular, and Asia in general. Along the way, they made several new geographical discoveries. These geographical discoveries
will lead to establishment of colonies. Establishment of colonies is going to facilitate long distance trade. समझ में आता है? अब ये ट्रेड कौन करेगा? ठीक है? Trade will not be done by the feudal elements of Europe का society, because ठाकुर साहब अपने गांव में कुछ नहीं, he has everything that he wants, ना, अन्न धान्य फूड ग्रेन जमीन इतनी है तो वो सब भरपूर, काम करने के लिए गांव के किसी को भी बुला दिया काम करने के लिए, अपना वो फ्री में काम करेगा, ठीक है? He does not need anything now. He is very happy. He is satisfied like today. भगवान कर दिया वो सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? Who will do the trading activities? These will be upstart people who want to profit in this opportunity. New class of people who will enter into this business of long distance trade. और जितना distance long होता है उतना risk बढ़ जाता है. Atlantic में trade करना है, समुद्र में तूफान आते हैं, ship can capsize, समुद्र के अंदर में डाकू होते हैं, pirates की तरीके की सीरीज आपको पता है, ये एरिया बड़ा फेमस था pirates की. Then there are wild tribes in these areas. आप ट्रेड करने के लिए जाओगे, शाम को आपकी बिरयानी बना करके वो खा सकते हैं, ठीक है? Wild tribes, many tribes की यहाँ पर, ठीक है? So जितना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ज्यादा क्या बढ़ रहा है? More the risk, more the profit. More the risk, more the profit. Just to give you an example, when Vasco da Gama came to India, 1498 में भारत को आए, for every 1 rupee that he invested, 1 रुपया जो उसने लगाया उस सिस्टम, he earned a profit of 60 rupees for that. 1 रुपया लगाया, 60 रुपए का प्रॉफिट. 100% प्रॉफिट अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता है. तो 1 रुपया लगाया, 1 रुपए का प्रॉफिट मिला तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट है. 200% प्रॉफिट. यहाँ पर मैं for 1 rupee he is getting how much? 60. Okay, so can you imagine the percentage of profit that you have? Okay, why? Because the risks are so high, and also the value of the goods that is given, that's also very high. Got this idea? So जो लोग ये ट्रेड करने लगते हैं, they start to amass a lot of profit. New class of merchant capitalist emerges in Europe. यूरोप के समाज के अंदर में एक नया वर्ग, एक नया क्लास क्रिएट हो रहा है, वो कॉल्ड एज व्हाट? मर्चेंट कैपिटलिस्ट. व्हाट इज पॉइंट? मर्चेंट मतलब द पर्सन हु डज ट्रेड. पैसे गुंतवतो तो इज इन्वेस्टिंग मनी इन व्हाट? ट्रेड. इज कॉल्ड एज मर्चेंट कैपिटलिस्ट. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? I told you the history is all about flow. When we will enter into industrial revolution phase, the first thing that will be required is capital. भांडवल पाहिजे ना पहले कहीं करने से. वो कैपिटल कहीं पर एक्यूमुलेट होना चाहिए. फ्यूडल लॉर्ड के पास में कैपिटल है क्या? Does he have capital? Monetary sense? No. Monetary sense में नहीं है उसके पास. हाँ, he has land, agriculture, he has servants, he has animals, but he does not have hard cash to invest. Because economy ही वैसी नहीं है. Getting this point? You need somebody who has money to invest. Where is that entity going to come from? It is going to come from this long distance trade. यही मर्चेंट कैपिटलिस्ट आगे जाकर के पैसा कहाँ लगाएंगे? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. बताइए. ओके. Now, these merchant capitalists face some difficulties while trading in Europe. माल तो उठा लिया हमने अमेरिका से, कैरिबियन से उठा लिया, साउथ अमेरिका से ले लिया, दुनिया भर से ले लिया. अब जाकर के हमको इसको यूरोप में बेचना है. While selling it in Europe, they face a problem. What is the problem? In Europe, the king is weak and the feudal lords are strong. एक राजा के नीचे hundreds of feudal lords हैं. So while traveling from one area to another area, they have to pass through the territories of different feudal lords. And each feudal lord imposes taxes whenever you enter into his area.
This made doing business very difficult and expensive. So very well. King is one, he is weak. There are many feudal lords under him. पुणे जिला क्रॉस करना है आपको, सोलापुर से आप एंटर कर रहे हो, ठीक है? सो दौंड में से गुजरना है, हवेली तालुका से जाना है, पुणे सिटी से होना है, मावड़ में से जाना है, फिर मुंबई जाना है, राइट? सो एवरी फ्यूडल लॉर्ड इज गोइंग टू इंपोज टैक्स. जैसे जीएसटी से पहले ना दोस्तों, वी हैड स्टेट टैक्सेस, मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस. पुणे से पुणे सिटी, पुणे कॉर्पोरेशन एरिया से इफ यू वेंट टू पीसीएमसी, तो बॉर्डर पे आपको ऑक्ट्राई देना पड़ता, ज़कात देनी पड़ती थी. एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही सिटी में आप है, दो कॉर्पोरेशंस है, आपको बॉर्डर पर ऑक्ट्राई देना पड़ रहा है. गाड़ी रुकाइए, टैक्स भरिए, पावती लीजिए, फिर आगे जाइए. अब ऐसा पूरे भारत में अगर आपका गुड्स जा रहा है तो कितना डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है. सो व्हाट वी ब्रॉट इन जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम. सो द मर्चेंट्स आर सेइंग द सेम थिंग टू द किंग कि राजा साहब आपका ही राज है, लेकिन ये इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेड. द किंग सेज आई कांट हेल्प इट. Why? Because the feudal lords have become very strong, okay, and I don't have the resources to finish off these feudal lords. मेरे पास उतना पैसा नहीं है. Moreover, ये जो feudal lords हैं, they used to live in castles. मराठी में हम कहते हैं गढ़ी. और ये castles कहाँ बिल्ड होते थे? Obviously, किसी पहाड़ के ऊपर में बिल्ड होते थे. So that even if the king comes with his army, the feudal lord used to simply lock himself up from inside. Food वगैरह तो उसके पास में बहुत है. पानी के तालाब के आसपास में ही castle बना होता था. खाना है, पानी है, सेवक है. The feudal lord used to live a majani life inside, whereas the king was shivering in cold, trying to win that castle. So this made the feudal system very strongly entrenched. समझ में आता है? राजा helpless है. Now the merchants tell the king, you don't worry, we will give you money. हमारे पास में पैसा है, ठीक है? You have the authority, political authority. You build up a modern artillery-based army, बड़ी तोपे वाली army. Okay? With these big guns, you can blast the castles of these feudal lords. हम पैसा देंगे आपको, ठीक है? So these merchants are able to give money. The king is able to build a modern artillery-based army. And using that, he subdues all the feudal lords and ends the feudal system in Europe. नहीं मतलब क्या हो रहा है? Yes, no, can't say. ठीक है? So now feudal system will end, and in its place, a new type of polity will start in Europe, which will be called as absolute monarchy. कंसेप्ट है, क्या टर्म है? एब्सोल्यूट मोनार्की. मराठी हिंदी में अगर मैं कहूं आपको तो एकाधिकारशाही असलेली राजसत्ता, एब्सोल्यूट मोनार्की. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एब्सोल्यूट मोनार्की? Two characteristics are important. First characteristic, absolute monarchy. The king claimed divine right to, divine right मतलब God himself, दैवी अधिकार. God himself has appointed me to rule, divine right. And second is, all power is concentrated in the hands of the king. शिवगामी बाहुबली, मेरा वचन ही है शासन. डायलॉग सुना, ठीक है? क्या बताता है डायलॉग? मैं जो बोलूं, मी म्हणणार तो शब्द, मेरा वचन ही है शासन. All power is concentrated in the hands of the king. This is absolute monarchy. So मैं कैसा पूछूं, कहां पर मैं वो 1453 का फॉल, उसकी वजह से ऑल्टरनेट सी रूट्स की तलाश, एक्सीडेंटल डिस्कवरीज ऑफ न्यू लैंड्स, वहां पर मैं बनी कॉलोनीज की वजह से शुरू हुआ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में से इमर्ज हुआ एक रिच मर्चेंट कैपिटलिस्ट. अब ये मर्चेंट कैपिटलिस्ट को यूरोप के ट्रेड में प्रॉब्लम आ रहा है. So he is helping the king to subdue the feudal lords, and because of that, a new type of polity emerges in Europe, which is called as absolute monarchy. There are flow linkage somewhere. Everybody? Yes. Okay. Check. आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट, जैसे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म होगा वैसे यूरोप में राइज ऑफ मनी बेस्ड इकोनॉमी। ठाकुर साहब को कैश की जरूरत नहीं थी, कैश के बाद में करने के पैसा आपके पास होगा तो आप क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, या तो वस्तु खरीदते हैं गुड्स, या आप सेवाएं खरीदते हैं सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। ठाकुर साहब को गुड्स जमीन ही अपनी, ठीक है, तो जमीन पे जो भी उग रहा है सारा हमारा है, ठीक है, और सर्विसेज लेनी है, लोगों से काम लेना है, तो हमारी जमीन पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये हमारे ही सेवक, तो इनको भी पैसे देने की जरूरत है, ना गुड्स को पैसे देने की जरूरत है ना सर्विसेज को पैसे देने की जरूरत है, तो इकोनॉमी का डीमोनेटाइजेशन हो गया। ओके, जब फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए यू विल नीड मनी, सो यू विल सी स्टार्ट ऑफ मनी बेस्ड इकोनॉमी इन यूरोप। बट ये मनी बेस्ड इकोनॉमी क्यों आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। This phase is called as rise of mercantile capitalism. Merchant is a trader. Mercantile or mercantilism means trade. ठीक है? Mercantile capitalism क्या होगा? When money is invested where in trade. Capitalism या भांडवल, what does it mean? You invest money to earn profit in that process. That is capitalism. अब ये पैसे इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, गुणगुण करें चाहिए। Where are you going to invest? कुछ तो फील्ड होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्ट करें। So the first field is in trade. Mercantile capitalism. What does it mean? We will buy some goods where they are cheap. वहां से उसको उठाएंगे खरीद कर और किसी और जगह ले जा करके बेचेंगे जहां पर में वो एक्सपेंसिव है। In the process, we earn what? We earn profit. This is the idea of mercantile capitalism. ये पहला स्टेज है कैपिटलिज्म का। चीजें जहां सस्ती है वहां पर से खरीदो, जहां उनकी डिमांड है वहां पर में सेल करो and earn profit in that process. This is called as mercantile capitalism. Got the idea? Yes, no cards, sir? Okay. Now these merchant capitalists, they have amassed a lot of wealth through the profits, but they don't have political power. सत्ता मध्ये त्यांना वाटा नहीं। We have absolute monarchy, ठीक है। So अब जब इकोनॉमिक पावर आ जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो डिजायर अनलॉक होती है वो पॉलिटिकल पावर की होती है। गांव के अंदर में किसी ने 4 एकड़ खेती बेच दी, तो अब अगली चीज वो क्या करेगा, सरपंच के इलेक्शन लड़ाएगा, एग्री करते हैं क्या आप? इकोनॉमिक पावर आने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट जो डिमांड होती है वो पॉलिटिकल पावर। These merchants in Europe, particularly Britain, they have a lot of money but not say in political power. और ये सिर्फ ambition के लिए नहीं कि आपने सरपंच लोग नहीं बने, not just because of that. It makes sense if you want to remain rich and grow richer, you must have access to political power also, so that the rules, laws are shaped in your favor. Are you know? So automatically, next demand is political. This will lead to a revolution in Britain called as the Glorious Revolution. 1688 में this revolution will take place. This revolution will limit the power of the king. पहले जो absolutism था उसको limit किया जाएगा, constitutional monarchy ब्रिटेन में implement होगी। पार्लियामेंट में rich people को representation मिलेगा। क्या हो रहा है इसकी वजह से? यू आर गेटिंग शेयर इन पावर। सत्ते क्वार्टर में राजा का पावर लिमिट हो गया, पार्लियामेंट की वोटिंग के अंदर में इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का राइट मिल गया टू द रिच पीपल, कॉमन मासेस नहीं, उसको व्हाट है, ओनली द रिच एलिट्स। सो व्हाट इज हैपनिंग, अलोंग विद इकोनॉमिक पावर दे आर आल्सो हैविंग सम शेयर इन पॉलिटिकल पावर। दिस इज द स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। नहीं बता पाते, इकोनॉमिक पावर लीडिंग टू पॉलिटिकल पावर, ठीक है। अब इसके आगे 3 पैरेलल ट्रेंड्स हम यूरोप में देखते हैं, स्पेशली ब्रिटेन। 3 थिंग्स दैट आर पैरेलली टेकिंग प्लेस। यहां तक तो हमने सारा सीक्वेंस ट्रेस किया, वो सीक्वेंस समझ में आया ना आप लोग? जैसे इंडिया में वो मतलब
पुणे से ही उधर भी हुआ था ना, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे जो यहाँ मर्चेंट टाइप थे, उन्होंने भी सही किया था ना। नहीं, इंडिया का कंटेक्स्ट डिफरेंट। इंडिया के अंदर में दे केम एज colonial power and we had to struggle and fight for our independence. यहाँ पर में they are themselves the rulers. Okay, people are demanding democracy as a right. So वो जो processes हैं ये different है। वहाँ पर में किसी और का राज नहीं है। भारत में एक foreign power was ruling. ब्रिटेन के अंदर में foreign power नहीं है। वो अपने ही राजा के पास से ज्यादा political power जो है वो डिमांड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सो रूलर्स आर लोकल देयर। हमारे केस में रूलर्स वर फॉरेनर्स। नेक्स्ट क्या पैरेलल डेवलपमेंट है? फर्स्ट, साइंटिफिक डिस्कवरीज और इनोवेशंस। यूरोप अब धीरे धीरे एज ऑफ रीजन में आ रहा है। एज ऑफ रीजन यानी तर्क, लॉजिक, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, this should be the touchstone on which we decide something, not a religion, not superstition. जैसे हमारे भारत में भी था ये आइडिया और यूरोप में भी था, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो आगे नहीं जाना चाहिए, अपशकुन। ठीक है, this was an idea that was dominant at one time in the society. Europeans say कि we will not believe in these ideas unless there is something to prove based on logic, based on reason, based on experimentation or observation. So this will start scientific revolution in Europe. The idea of asking questions as a काम विवेकवरती आधारितच आपण विश्वास ठेवणार आहोत. This will lead to many discoveries and innovations in Europe that will take place. This is one development. इसी के consequence में एक और parallel development हम देखेंगे, which will be called as agricultural revolution. पहले हमने क्या देखा? Scientific revolution. Second है agricultural revolution. Whatever we learn in science, or for that matter in any subject, we try to apply that in our areas of interest. सही है नहीं? जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको हम apply करते हैं as a species, human beings as a species, in those areas which are very important for us. So whatever was being learned in science naturally got applied to agriculture because agriculture was the mainstay of economy. ठीक है, इसलिए agriculture में we are going to see many revolutions or innovations taking place. I'll give you one example. बाइबल में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि किसान किसानी कैसे करता है और वो डिस्क्राइब करता है। वहां लिखा है ऐसे, किसान जो है वो एक गले में सैक लगा करके अपने फील्ड में जाता है, उस सैक के अंदर में सीड होते हैं, बियाणीज, एंड दोस सीड्स आर देन ब्रॉडकास्टेड बाय द फार्मर ऑन द फील्ड। ठीक है, दिस वाज द वे दैट वाज यूज्ड फॉर sowing of seeds in Europe at the time of Christ. Okay, and that same method was used right up to this point before the scientific revolution. So which means for more than 1,000 years the same system of sowing seeds was used. अब scientific जब revolution होता है, Europeans start to do two things: observation and experimentation. This is the base of scientific knowledge, observation and experimentation. So they see when this method is used of broadcasting seeds, the strike ratio of seeds is very poor. For every 100 that you scatter, only 20-25 germinate. So बाकी के तो waste हो गए seeds. This is our observation. So how can we improve this strike ratio? They develop a device for this. The device is called as seed drill. वो एक लकड़ी बनाते हैं, उसके आगे एक ऐसा डिवाइस अटैच करते हैं जिसके अंदर में सीड्स रखी जा सकती हैं, और किसान जो है जैसे अपने फील्ड में जाएगा वो उस लकड़ी को पोक करेगा जमीन में, और जैसे जैसे वो पोक करेगा वैसे वैसे वो सीड्स सॉइल के नीचे 2 इंच 3 इंच जाकर के इंसर्ट होगी। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटेशन। रिजल्ट क्या आया? सडनली द स्ट्राइक रेशियो मैसिवली इंक्रीज्ड। अब सीड्स को ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो क्रॉप का जो यील्ड था वो मैसिवली इंक्रीज हो गया। दिस इज जस्ट वन सिंपल टेक्नोलॉजी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन।
many such technologies were introduced. Consequently क्या होगा? एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आएगा तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मोर पॉपुलेशन कैन बी सपोर्टेड. पॉपुलेशन इंक्रीज होगा. पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो ये पॉपुलेशन दो चीजें करेगा. एक तो सिटी की तरफ माइग्रेट, क्योंकि ग्रामीण एरिया में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, मोर पॉपुलेशन, सो माइग्रेशन टुवर्ड्स cities. One. And second, it will provide labor and market for industries. But the idea, हम सब किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डायरेक्शन के अंदर में. So these developments are all contributing towards industrial revolution. So मैं आपको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन पक्का? ठीक है. Now इसके साथ साथ में पैरेलली एग्रीकल्चर की फील्ड में there is one more development that takes place, which you can read here, is inclusion movement. What is this inclusion movement? मराठी में इसको कहते हैं, हिंदी मराठी के अंदर में बाड़ा बंदी. बाड़ा बंदी मराठी में चढ़वट मूवमेंट. What is this बाड़ा बंदी और inclusion movement? अब इसको समझिए. Earlier in Britain, the lands of the lords were accessible to anybody who wanted to do cultivation. जैसे फॉर एग्जाम्पल ठाकुर साहब की जमीन है और हरिया हमारा गांव में रहता है. ठाकुर साहब की जमीन पूरी खुली है, हरिया चाहे जहां वहां जाकर के खेती कर सकता है. बट ही हैज टू गिव अ शेयर टू ठाकुर साहब, क्योंकि जमीन उनकी है, मेहनत हरिया की है. कूड़ जो कंसेप्ट आपने कहा वो यहाँ पर रखे थे. बाद में ठाकुर साहब को रियलाइज हुआ that he can earn more profit in sheep rearing rather than allowing हरिया to cultivate the farm. ठीक है, हरिया फार्म कल्टीवेट करे, इससे बेहतर है कि मैं उस फार्म के ऊपर में मैं शीप रेयरिंग करूं. शीप आप समझते हैं, मेंढर पालन. ठीक है. So what does the feudal lord or ठाकुर साहब do? He builds up an enclosure on his land, compound, बाड़ा. ठीक है. और उस बाड़े के अंदर में he starts to rear sheep, मेंढी पालन. आपने यूरोप, हमारे बॉलीवुड के अंदर में बहुत सारी फिल्मों में, सॉन्ग्स में यूरोप का कंट्री साइड दिखाया जाता है. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ दीस एनक्लोजर्स, और वहां पर में अंदर जो है वो शीप रेयरिंग हो रही है. ठीक है, ये कांसेप्ट वहां से आया हुआ है. सो अब ये शीप रेयरिंग जब स्टार्ट हो गई तो हरिया के पास में अब जमीन नहीं है, पूरा पेड़ आपल्या जमीन नहीं है. He does not have land to cultivate. So what will Hariya now do? Hariya does not have access to land in rural areas. What will Hariya have to do? He will have to go to cities. Population बढ़ गया है, already saw that agriculture production की वजह से. अब जमीन भी नहीं है तो क्या होगा? We have migration towards cities. Many new towns and cities will be born in this process. Manchester, Leeds, Glasgow, Liverpool, ये सारे नाम आपने सुने हैं, लेकिन फुटबॉल क्लब्स के लिए सुने मुझे पता है. So all of these cities will be born in this process. Got the idea of this? Are you able to trace start to end कैसे एक चीज दूसरी चीज को cause करते हैं? So what I told you ना, that flow of history that you must understand. ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आया पैटर्न? इसे अब बंद करें सभी. ठीक है, got the point? Yes, no, guys, sir? Now let us see what are the factors that led to this revolution in England. UPSC has already asked one question on this very aspect of this topic. What are the factors that led to industrial revolution in England first? अगर इंग्लैंड में ही पहले हो रही है तो कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी इंग्लैंड की. फ्रांस में नहीं हुआ, इटली में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ. So let us see what were the conditions that were responsible for this revolution in England. First, we will see geographical conditions. We're going to see what? We're going to see the geographical conditions of England that were responsible for this revolution. First and foremost, we see that
Britain is an island. Agree करते हैं आप लोग इससे? Island होने की वजह से Britain was politically much more stable than any other European country. If you have money, you want to invest it, and I give you two options: invest it in Singapore or invest it in Afghanistan. Where will you invest? Obviously, Singapore, not Afghanistan. Common sense. Why? Because political stability matters a lot. Okay? Britain, being an island, unlike Europe, was politically stable. Relatively, the wars were less. Change of regime was not there. Invasions were not there. Therefore, it provided a conducive environment for the investors, the capitalists, to invest their money. ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से अपना कैपिटल जमाया है, मैं उसको ऐसे रिस्क में नहीं लगा सकता ना, जहाँ पर मैं वॉर्स हो रही, फ्रांस में there were a lot of wars, Italy, Germany, lot of wars, so Britain is preferred. Second, natural harbors of Britain. If you see the coastline of Britain, इस map में भी आप देख सकते हैं. In this map you can see the coastline of Britain is very crooked, very वाकई. And because of this crooked coastline, many of these sort of areas are created where natural harbors exist. Natural harbor मतलब क्या? Harbor जो है वो ऐसा होना चाहिए कि समुद्र में जो disturbances आती है ना, उससे उसको natural protection. Okay? मराठी में तो ना आड़ों से बना रहता है. Okay? You need to have some kind of a structure, natural structure, which will protect it. And this crooked coastline led to many natural harbors in Britain. Okay. Mumbai, for example, Mumbai is a natural harbor. क्यों natural harbor है? See the map of Mumbai. Mumbai is a triangle है projected into Arabian Sea. So मज़गांव जो dock है आपका इस तरफ में, उसको एक natural protection मिलता है. ठीक है? Mumbai language में बोलते हैं ना खोपचा. ठीक है? Natural harbor is when that खोपचा is created because of such coastline. समझ में आता है? So Britain has many natural harbors. जब नेचुरल हार्बर होता है कहीं पर में, तो वहां पर में ऑटोमेटिकली मैरीटाइम एक्टिविटी पहले से देयर इज अ सी फेयरिंग कम्युनिटी. समुद्र में जाना, ट्रेड करना, इसका एक पुराना इतिहास होता है. ब्रिटेन के अंदर में ये चीज पहले से थी. अगर आप इंडस्ट्री बनाएंगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फिनिश गुड्स. फॉर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट एंड वेरी क्रूशियल इज द रिजर्व्स ऑफ कोल and iron. Iron is the most important raw material during industrial revolution, and coal is what is going to be the fuel for the revolution. पहले coal use होता था, but on a limited scale. उसकी calorific value यानी उसके अंदर की जो छुपी हुई एनर्जी है, इसको exploit करने के लिए on a mass scale technology नहीं था. Industrial revolution will provide that. Coal will be heated, energy generated out of that will be used to create steam from water, and then that steam will be used in different processes. Okay? So coal or iron ka hona was very crucial. You can see here in the map, the red shaded areas are reserves of iron, and yellow shaded areas are reserves of coal that are found in Britain. Dono hi most important inputs are available. In crisscrossing tributaries and rivers. Crisscrossing tributaries and rivers. एक दूसरे को ऐसे छेदने वाली नदियां और rivers. Why is this important? Because of this crisscrossing nature, canal-based transport became possible. Transport करना पड़ेगा ना आपको, raw material, goods, right? Now for that, the easiest way is water-based transport. Water-based transport is cheap. It is easy also to operate. और उसके लिए आपको ऐसा नेटवर्क चाहिए of water bodies. Britain में वो geographically naturally available. Okay? So these are the geographical factors that led to industrial revolution in Britain. समझ में आता है? What are we seeing? Factors responsible. उसमें first type of factors geographical. Next set of factors is political, Rajkir. First and foremost, political stability. Overlap many points.
Political stability is crucial for investment decisions that Britain had. Second, democratic developments in Britain. Unlike in Europe, in other countries, where the power was concentrated with the monarch, in case of Britain, we see development of democracy. And because of democracy, the rich elites had share in power. They were there in the parliament. Constitutional rule था. Consequently, their investments could be protected. State की जो policy है, वो इनके हिसाब से बनाई जा सकती थी. Laws pass किए जा सकते थे, which favored industrial revolution. All of this was possible in Britain. It was not possible in France. France में absolute monarch है, राजा के हाथ में सब कुछ. आपने इंडस्ट्री बना दी, कल राजा बोलेगा कि नहीं करने का इंडस्ट्री बंद. You have to stop it. Britain में you have parliament, laws में, judiciary में, ये सारी चीजें protect करती हैं. Third, the nature of the state. The state itself was pro-capitalist. East India Company का नाम सुना होगा? East India Company में investments किसकी थी? It was all the rich elites, monarch, royal family, all the big people of Britain. They had invested money in East India Company. Okay. So the nature of the state itself was capitalist. पैसे गुंतवायचे आणि त्याच्यातून return कमवायचं. Invest money and earn profit. This was the outlook of the rich elite of the state. Consequently, the nature of the state itself is pro-capitalist. They understand the importance of this investment. Getting this point? Ruling class support is again aligned with that. Therefore, we see in Britain many laws were passed which were beneficial for industrial revolution. इस क्रांति के लिए जो helpful थे, ऐसे बहुत सारे laws Britain के अंदर में पास हुए. I already gave you the example of enclosure movement. Laws were passed to implement enclosure movement in Britain. And why is this movement important? Because migration has to take place from rural areas to urban areas. Okay? 3 साल पहले का इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट एक साइड नोट पे आपको चीज बता रहा हूं. इकोनॉमिक सर्वे विल बी अ वेरी क्रूशियल सोर्स फॉर यू टू प्रिपेयर. अभी नहीं, जब वो आएगा फरवरी में, तब उसमें गवर्नमेंट की आगे आने वाली पॉलिसी और पिछले साल का परफॉर्मेंस, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है. इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दुनिया में जिस किसी देश ने प्रगति की, whichever country has developed in the world, they have all picked up people from agriculture and taken them to manufacturing. This is the formula for progress, growth, development across the world. Pick up people from agriculture, शेती मधून बाहेर काढायचं त्यांना, and take them to manufacturing. ठीक है? Britain में enclosure movement did exactly that. By allowing Thakur Sahab to have an enclosure on his land, जो पहले नहीं था, law pass करके इसका अधिकार दिया. It forced Haria to go from village to the city. So Haria is there in the city. Now he will have to work in manufacturing sector, boost to the economy. हमारे भारत में क्या हुआ है? Problem is even today in agriculture we have over dependence, disguised unemployment. ठीक है, एग्रीकल्चर पे लैंड पे प्रेशर हमारे यहाँ ज्यादा है. एवरेज हमारा होल्डिंग कितना है पता है? 0.67 हेक्टर. ये हमारा एवरेज लैंड साइज. इस लैंड साइज के अंदर में प्रॉफिटेबल खेती हो ही नहीं सकती, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती. ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. होना क्या चाहिए? इनको उठा करके हमको ले जाना है मैन्युफैक्चरिंग. बट द प्रॉब्लम हैज बीन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन बेस्ड ऑन द अदर सेक्टर व्हिच इज सर्विसेज. ठीक है, एंड सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत कम होता है. मेरा एक फ्रेंड है, आईटी कंपनी चलाता है. ठीक है, उसके पास में 3 एम्प्लॉइज हैं. कितने एम्प्लॉइज हैं? 3 एम्प्लॉइज. 3 एम्प्लॉइज का आईटी कंपनी चला रहा है, करोड़ों रुपए. ठीक है, दैट सेम लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में लाना होगा तो आपको 25 लोगों को एटलीस्ट काम करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन हमारी ग्रोथ किससे डोमिनेटेड है? सर्विसेज से. सो ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन जॉब्स नहीं. ठीक है, इसीलिए सर्वे कहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, जैसे ब्रिटेन ने किया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एंड दिस वाज हेल्प
because of the laws that were passed. Enclosure laws, one such example. Okay. Second example, navigation laws. Britain passed a law, series of laws in fact, which said that British colonial empire, जो भी trading चलेगी, that will be done through British shipping only. और state law पास करना political factors हम देखते हैं. किसको promote कर रहा है वो? British shipping को. British shipping becomes strong, so British industry भी strong होगी automatically. ठीक है? So many such laws were passed in Britain. We saw geographical factors and we saw political factors. Can you tell me the geographical factors by the way? क्या याद आ रहा है आपको? Geographical factors. पहला island. Second, natural harbors. Third, coal and iron. Fourth, crisscrossing of rivers. Very good. Most of you remembered all the points. देखिए, मैं क्यों emphasize कर रहा हूँ? Structured तरीके से अगर आप देखते हैं चीजों को, it becomes easy for us to remember things. Very easily you're able to tell the points. Political factors में क्या कहेंगे हम? Political stability. Third, capitalist state. Several laws were passed to support the industry. समझ में मतलब ठीक है, simple है, easy, okay. चलो, so हमने क्या क्या देखा? Geographical देखा, political देखा. Now let us see some economic factors. What were the economic factors leading to industrial revolution? Now some of the factors will be common, जो multiple dimensions रखते हैं. Political में भी आएंगे, economic में भी आएंगे. Economic में first, enclosure laws. What did this do? It allowed availability of labor. Industrial revolution में labor important है. Second, agricultural production increased. More food production means more population. More population means bigger market and more labor again. Industry के लिए चाहिए नहीं? We need it. Third, availability of capital, very important. कहाँ से आया ये capital? ये भांडवल कहाँ से आया? Where does it come from? From the mercantile capitalists. Do you understand now? वो सारी history की important थी. Because first thing that we require in industry is capital. अब वो capital कैसे generate हुआ? वो उस long distance trade में generate हुआ है. So availability of capital. Modern India में, in your school times also you have read about Dadabhai Naoroji and his train theory. सुना है ना आपने train theory? सुना है train theory के बारे में सुना है? Dadabhai Naoroji ने theory दी थी that capital of India is being drained away by British. भांडवलच अपने घेऊन जाते. देखिए कोई इंसान अगर आज गरीब है, लेकिन उसके पास कैपिटल है, तो वो 3-5 साल में अमीर बन सकता है. लेकिन उससे अगर उसका कैपिटल जैसा भांडवल घेऊन टाकला, so he is perpetually condemned to poverty. है ना ये बात सही? ठीक है, वो भारत के साथ ना हुआ. Getting this? ब्रिटेन के साथ में रिवर्स हुआ है. They have got capital, okay, through this trade, and that is now being invested in industry. Got the point? Next, development of banking systems. Modern banking system has developed in Britain. Bank of England, first modern bank of the world, ये ब्रिटेन से ही obviously developed हुई. 1857 में दोस्तों जब हमारा उठाव हो रहा है, we had this revolt of 1857, there were 3 banks in India. कितनी banks थी? 3 banks. ब्रिटेन में उस वक्त में 600 banks. ब्रिटेन की साइज कितनी? और इंडिया का मतलब उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया. So पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार भी उस वक्त तक था. तो everything is part of British India. ठीक है? 3 banks था और 600. Why is banking important? Mobilization of resource, savings के जरिए से, access to credit, payment systems. अगर आपको इंडस्ट्री चलानी है, बिजनेस करना है, तो ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है? So banking system allowed that. ये institutions वहाँ पर में थी. Next, emergence of cities. शहरांचा उदय. Ruralization का medieval times में, and धीरे-धीरे हमने देखा कैसे cities बन रही हैं, क्यों emerge हो गई cities. Merchant capitalist आ गए. अब ये capitalist आ रहे हैं, गांव में नहीं है, शहर में नहीं है.
ऑब्वियसली सिटी में रहेंगे, सिटी में दे विल नीड सर्विसेज ऑफ अदर पीपल, उनको हमाल चाहिए, पोर्टर्स सामान उठाने के लिए, ढोने के लिए, उनको लॉयर चाहिए टू फाइट देयर केसेस, रिप्रेजेंट देम, उनको क्लर्क्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स, सो मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, सो सिटीज का इमर्जेंस होने लगता है. एनक्लोजर मूवमेंट, फोर्सफुल माइग्रेशन टू सिटीज, मेनी सच थिंग्स हैपन. एंड ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट ऑफ मैकएडमाइज्ड रोड्स. कितने सिविल इंजीनियर्स हैं बाय द वे? एनी सिविल इंजीनियर हियर? नोबडी? अच्छा. पक्का रोड जिसको हम कहते हैं, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता, दैट कांसेप्ट ऑफ पक्का रोड इज बेसिकली मैकएडमाइज्ड रोड. खड़ी, उसके ऊपर में क्रश्ड खड़ी, फिर डस्ट एंड देन टार, डांबर, और उसको रोलिंग. ठीक है, वो जो रास्ता बनता है, दैट कांसेप्ट वाज गिवन बाय मैकएडम, अ स्कॉटिश इंजीनियर. इसके नाम से मैकएडमाइज्ड रोड. रोड से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट बिकम्स फास्टर, चीपर एंड मोर कन्वीनियंट. इंडस्ट्री के लिए चाहिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ऑल दिस इज रिक्वायर्ड. वेरी क्रूशियल इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे. 1814 Britishers introduced the railway in their country. मैनचेस्टर से लिवरपूल दौड़ने वाली रेलवे बनाई गई. 1833 it was used to transport people for the first time. पहले सिर्फ कोल वगैरह ट्रांसपोर्ट, फिर बाद में लोगों को ट्रांसपोर्ट करना. रेलवे से क्या हो गया? मच मोर चीप ट्रांसपोर्ट, मच मोर कन्वीनियंट, फास्ट एंड इजी. कोलसा बहुत माइंस के अंदर से निकालना पड़ता है. पहले फैक्ट्री माइन के पास बनानी पड़ती थी जहां पर में ये रिसोर्सेज अवेलेबल है. बट बिकॉज ऑफ रेलवे इट वाज नाउ पॉसिबल टू शिफ्ट द फैक्ट्री अवे फ्रॉम दीज सोर्सेज. This transport now became easy and cheap. Postal system, modern communication system, postal system, ये भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया. But doing business you need communication. लेटर्स भेजने पड़ेंगे, चेक्स भेजने पड़ेंगे, पेमेंट आपको देना पड़ेगा. ये सारी चीजों के लिए पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस. भारत में 1854 लॉर्ड डेलहाउसी will introduce this in India, modern postal system. But Britishers, they were doing it for last 40-50 years. Then technical training. एक तो होता है theoretical training और दूसरा होता है technical training. शेक्सपियर पढ़ने से फैक्ट्री में काम करना नहीं आता. ठीक है, वो वहां पर मैं मशीन के सामने खड़े रह के बोलेगा to be or not to be is the question. That is not what is required. You need skills. Okay, so skill-based institutions were developed in Britain. हमारे यहाँ ITI का नाम आप सुनते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. That concept has come from Britain. So इंसान को वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, ओके, टर्नर, ऐसी जो स्किल्स हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती थी. टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, so that you have manpower ready for work. स्किल इंडिया का रिपोर्ट लिख लीजिए इसको. राइट हो, स्किल इंडिया का रिपोर्ट. Only 47% of Indian graduates, only 47% of Indian graduates have skills that make them employable. Only 47% of Indian graduates have skills that make them employable. Means 53% don't have skills at all. कि उनको काम पर रखा नहीं सकते. ये हमारे यहाँ पर लेवल ऑफ हमारा स्किल ट्रेनिंग. That's why स्किल इंडिया मिशन और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए. Britishers understood the importance of this and very early they focused on skill development. That's why industrial revolution became successful. 3000 innovations दोस्तों, 3000 innovations in industrial processes were done by workers. इंडस्ट्री में काम करने वाले जो कामगार हैं, इन्होंने innovations किए. कितने? 3000. They were not formally educated, but they were trained in the skill. Okay. So these were the economic factors of this revolution. अगली क्लास में हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हमने बेसिक्स देखा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. आगे हम इसके implications क्या हैं वो सब देखेंगे. I'm just trying to give you a taste, okay, of world history. As we go along,
we will enter into more depths. We'll write a lot of answer, we'll do a lot of answer writing also in due course of this process. Okay. I'll see you in my next class. If you have any questions, please feel free to ask. Before I close it, next few days the demo lectures are going to continue. Okay. So you can attend some more lectures. All the subjects, the basics, core of these subjects will be introduced to you in the course of these discussions of demo lectures. So you say that we mentioned about this.